Hello, you're watching Hornbill TV's Prime Time. In a Manipur, Member of Parliament Agomcha Bimola Koijam on Thursday described the recent Litan incident and renewed violence in the state as alarming, particularly at a time when a popular government has only recently assumed office. Addressing a press conference at his residence, Bimol said the recurrence of violence at such a critical juncture undermines ongoing efforts to restore normalcy in Manipur. While condemning the incident, the MP acknowledged what he termed a positive development, the mediation efforts undertaken by Tangkhul and Kuki MLAs in the aftermath of the violence. Calling for accountability, Bimol stressed that those responsible for triggering or instigating violence must be identified and dealt with strictly in accordance with the law. Bimol further urged structured and sustained political dialogue between Meitei and Kuki communities, emphasizing that lasting peace can emerge only through direct engagement, trust building and sincere negotiations. Yeah. Okay, sir. Please start from Litan first, sir. Thank you for coming. I just wanted to share with you a couple of issues, particularly this violence that had erupted on 7th and 8th of February in Litan. There are some positive development we can see despite the violence. The positive development is that the elected members from Kuki communities and Tangkhul's and other, they meet and try to sort it out, and this is a very commendable, responsible act of politicians. But the lesson that we must learn is that this kind of a conversation did not happen in the crisis that started on 2023, May 3rd. That's something that you should not just that one. But my appeal to the government is that this should not be allowed to happen, and one must crack down on those people who were responsible for the arson and the violence, and law of the land must operate. Third aspect is that what I get to see in social media, there are armed people moving around, sometimes openly threatening or engaging in this kind of a violence. But you have suspension of operations or otherwise also. The government should not allow this kind of a thing. Only the army, the paramilitary, the police and the central armed police, these legitimate forces should be the ones who use this violence and who can move around. You should not allow and encourage and normalize this kind of thing which we get to see in this violence as well. Last one is, as I said, we must be alert to this kind of a violence, because it's something like A and B is already in crisis, so B and C should also be in crisis, so then Manipur can be split it on marked communities line. So I was observing, what does this violence means, and Also, one last question. According to your assessment, sir, who is in charge of this unified command, and what is the role of this Mr. Kuldeep Singh in Manipur? Because you mentioned about state government being some kind of puppet in the hand of central government. So what is your assessment, sir? No, I don't know whether that particular thing has been revoked or not. I have no knowledge of it. I was expecting that this should be in the hands of the chief minister, rightfully so. And then he should be chairing sessions, whether it is our army commanders of the Red Shield Division or IGR South or any of the top officials of the security establishment in the state. The CM as a political executive head should be the boss to decide on this. Remember that I said when the Central Armed Forces works in the state, in the domain of law and order, they always work under the state government. They cannot work outside of the state government's authority. Law and order, that's why I'm hoping that our chief minister will take it over if it has not already been revoked, and that should be done away with it. If he can give an advisor so that somebody to aid, then he is welcome to have advisors, but actual chairman and actual political decisions to lead and spearhead this committee on the law and order, our CM should be the
Shivam Mishra, the alleged accused in the Kanpur Lamborghini accident, has been granted bail on a personal bond of ₹20,000 by the district court on Thursday. Speaking to the media, his lawyer Naresh Chandra Tripathi alleged that the police had been working under pressure from the government and wrongly arrested Mishra. और BNSS के प्राविधानों का उल्लंघन है। अभी कुछ ही दिन पूर्व बरेली में एक दरोगा जी को जेल भेज दिया गया। मैंने ये माननीय न्यायालय से कहा कि साहब इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो इन्होंने गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट बताया। गिरफ्तारी 7 साल से कम की सजा के अपराधों में की गई, वो भी गलत है। अर्नेश कुमार और सत्येंद्र अंटिल स्पष्ट कह रहा है। इसी के साथ में ये कार्रवाई जो पुलिस की थी, साहब माननीय न्यायालय इसको भांप गई थी। माननीय न्यायालय ने कई प्रश्न पूछे, आईओ नहीं बता सका, सरकारी वकील भी अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। तो माननीय न्यायालय ने अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन और BNSS के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए ये आदेश पारित किया है, रिमांड रिफ्यूज किया है। इससे उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा। ये माना जाए कि शिवम मिश्रा की रिहाई हो जाएगी? बिल्कुल अभी हो रही है। 20,000 रुपए की अंडरटेकिंग और 20,000 रुपए के PB पे वो रिहा हुआ है। एक तरीके से ये माना अगर कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। माना जाए पुलिस की गिरफ्तारी अवैध थी? बिल्कुल अवैध थी। नहीं, वो तो माननीय न्यायालय ने अवैध घोषित कर दी, रिमांड रिफ्यूज कर दिया। कितने दिन की रिमांड मांगी थी पुलिस ने? 14 दिन का। अच्छा, ठीक है, 14 दिन का ही होता है। हाँ। Shivam Mishra, son of tobacco businessman K.K. Mishra, was arrested on Thursday after court rejected his driver Mohan's claim of being behind the wheel. The accident occurred on Sunday, leaving 6 people injured and sparked controversy over who was driving. Police initially listed an unknown driver in the FIR, but later named Mishra based on CCTV footage and eyewitness accounts. Yesterday, the driver Shivam Mishra admitted that he was driving the Lamborghini, which rammed into an auto rickshaw, a bullet motorcycle and then a pole in Kanpur, leaving 1 person injured. Driver Mohan said that Shivam Mishra was sitting beside him and had a seizure and fell on him. UP Minister JPS Rathore meanwhile said the law is taking its course and legal action will be taken and is being taken. नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हो भी रही है। We will be right back after a short break, so stay tuned for more news. Ama, damdo kiman ase? Itu sabole lage na? Hoy, kile nimite ami duijundo budget thagibole lage do. Acha, thik ase. Ami khan dam to hodai saide hoilebi dabate jankari likhikina thakia do kiman bar pure. Hodai saman na kine agote daba opor likhi thakia khota khan to puribi. Ami khan jankar hobo nimite sob thik pra sabi. Ki khai ase itu janibi. खाना खानते क्यालोरीज एकला ना होइकिना चिनी निमक तेल और न्यूट्रिएंट्स किमान आसे इतो सब चेक करिबी किताबा तो हेल्दी खाना देबी चिनी और निमक बेसी थाकी जाय इतो खान सब जानिकिना थाकिबी सामान किनिया समेते होशियार होबी होदाय लेबल्स खान की कंपेयर करिबी और गाव निमिते जुन सबसे ভাল आसे इतो ही लबी फोर्टिफाइड खाना तो की आसे जाने फोर्टिफाइड खाना तो होदाय खा लगा खाना खाने ऐसे चावल आटा दूध तेल और निमक निशिना खान फोर्टिफाइड खाना दे आयरन विटामिन ए आयोडीन और किसिम गाउते लाकी थक्या न्यूट्रिएंट्स खान मिलाई किना से
45 खाना तो आमा और बच्चा खान निमित्ते बेसी ভাল আছে इतु प्रा गाँव के ताकत दे और इम्यूनिटी भी बढ़ाई दे 45 खाना तो इको अलग ना होय आमी खान घरते किनिका होदाय पकाय इतु निसनाही बनाबो और खाबो साबी तो 45 ना इतु लोहा पर जीवन और गाँवते डंगर बदली आनी दिबो पुरीबी जानिबी और भाबी किना हिलुबी होशियार होबी और जानकार থাকিবি আমি খান নাগা গালি বাল হব নিমিতে 45 খানা হি লবি sponsored by Food Safety Authority, Department of Health and Family Welfare, Government of Nagaland. Eat right, eat safe. Welcome back. Nationalist Congress Party Sharad Chand Pawar leader Rohit Pawar on Tuesday raised questions about the circumstances surrounding Ajit Pawar's plane crash, suggesting it might be a conspiracy. Rohit Pawar highlighted the atmosphere of suspicion, grief and political intrigue currently surrounding these events in Maharashtra. He mentioned an investigation into the accident, citing a book that suggests killing a person's driver is an easy way to target. Rohit Pawar pointed out that former Maharashtra Deputy Chief Minister and NCP Chief Ajit Pawar had changed plans, sparking speculations. The crux of the suspicion lies in the final 24 hours before the crash. According to Rohit Pawar, a series of last-minute changes suggested a deviation from the original plan. He claimed that Ajit Pawar was reportedly scheduled to travel from Mumbai to Pune by car the evening before the crash. The security convoy had already begun its maneuvers, yet Ajit Pawar never stepped into the vehicle. He also claimed a high-stakes meeting with a big leader that may have altered his travel itinerary at the 11th hour. प्रत्येक व्यक्तीला जो प्रश्न पडलेला आहे की अजित दादांचा जो ॲक्सिडेंट होता तो एक अपघात होता का घात होता हा प्रश्न प्रत्येक व्यक्तीला पडलेला आहे काल मुंबईकडे येत असताना पिंपरी चिंचवड मध्ये जेव्हा माझी गाडी स्लो झाली सिग्नल लागलं होतं तेव्हा माझ्या लेफ्ट साइडला एका रिक्षा चालकाने त्याची रिक्षा थांबवली खाली उतरला आणि माझी काच वर होती त्यामुळे काचेवर त्याने आवाज केला काच खाली घेतल्यानंतर त्याने सांगितलं अहो 9 तारखेला तुम्ही संध्याकाळी अजितदादांबद्दल काहीतरी सांगणार होता ऍक्सिडेंट बद्दल त्याचं काय झालं मी त्यांना सांगितलं काल नाही म्हणजे 9 तारखेला नाही तर 10 तारखेला मी या बाबतीत मला काय वाटतं हे तिथं सांगणार आहे या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आणि तुमच्या सर्वांच्या मदतीने लोकांपर्यंत मी आता पोहोचतोय काही लोकांनी भावनिक होऊन काय व्हिडिओ टाकलेत ते व्हिडिओ कसे आहे की दादा परत येतील 6 जण विमानामध्ये होते 6वे व्यक्ती दादा होते जी बॉडी तिथं सापडली ती दादांची नव्हतीच दादा आज येतील उद्या येतील मला त्यांना सांगायचं आहे की आज जर दादा परत आले तर मी सुद्धा त्यांना घट्ट मिठी मारेल Following Rohit Pawar's press conference, Shiv Kumar Mali, father of Pinky Mali, who was a member of the crew on the ill-fated charter plane, said he has started to doubt about the incident. He stated if there is a conspiracy, an investigation must be done. If it is an accident, the facts will only be known after a thorough investigation. रोहित दादा पवार ने जो भी कुछ खुलासा कर रहे हैं वो प्रेजेंटेशन देकर उसके ऊपर से अब मुझे भी शक होने लग गए हैं और कुछ बातों को लेकर रोहित दादा पवार की बातों से मैं भी सहमत हूँ। देखिए हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं झोपड़पट्टी के लोग हैं हम कहाँ दौड़ेंगे अब बेटी खोना था हमने खो दिया अगर घात है तो इसकी सरकार इंक्वायरी करे एक घात का मतलब होता है षड्यंत्र अब षड्यंत्र किसने रचा अगर रचा है तो ये तपास में आएगा अगर अपघात है
तो एक्सीडेंट कहलाता है अपघात। तो एक्सीडेंट हुए तो इसके अंदर भी इंक्वायरी के अंदर ही मालूम पड़ पाएगा कि क्या है। मालूम तो पड़े कि लड़की एक्सीडेंट में गई कि अपघात में गई, इस चीज का खुलासा हो। बेटी तो जाना था, चली ही गई। अब जो कुछ भी है हम लोगों की निगाह है, सरकार, महाराष्ट्र सरकार, क्या आज पूरा भारत देश इस चीज के ऊपर देख रहा है कि इसका खुलासा हो। बिटिया से, पिंकी से कुछ बात हुई थी जब वो अजीत दादा के साथ उस चॉपर में जाने की तैयारी कर रही थी? उसका ये 5वां टर्म था। 4 टाइम ब्लैक कलर का फ्लाइट रहता था, 5वां टर्म के अंदर ये व्हाइट कलर की फ्लाइट थी। अब किसी कारण चेंज हुआ वो पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे फोटो वगैरह भेजती थी, शेयर करती थी। मुझे रात को फोन करके बोली, पापा मुझे आपसे बात करना है, आप सो गए क्या? तो मैं सोने जा रहा हूँ। तो बोले कि ठीक है, मैं कल बारामती अजीत दादा पवार के साथ जा रही हूँ, वहां से फिर मैं नांदेड़ या सामदाबाद क्या वाया जाने वाली फ्लाइट थी। अब उसके दिल की बात दिल में रह गई। मुझे सरकार के तरफ से कोई भी अनुदान के बारे में या कंपोजिशन के बारे में अभी तक कुछ कांटेक्ट या कुछ खुलासा नहीं हुआ। रही बात कंपनी की, ASR वेंचर, इस कंपनी ने भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैं 2-3 बार फोन किया उनके HOD से कंपनी के, तो वो रिस्पांस नहीं दी। फिर 3 दिन पहले मेरे लड़के के मोबाइल पे एक ईमेल आया, ये फॉर्म भर के दे दीजिए। हमारा कहने का मतलब है कंपनी में मेरे लड़की का जो पगार है, जो उसका इंश्योरेंस है, जो बीमा या उसका जो अलाउंस निकलता था वो तो मिलना चाहिए। कंपनी ने हमसे संपर्क बनाना चाहिए। कंपनी का जवाबदारी था कि ये हादसा होने के बाद हमें बताए कि मुंबई में कलीना के ऑफिस से उसकी डेड बॉडी मिलेगी या आपको बारामती जाना पड़ेगा और या हम एम्बुलेंस से भेजेंगे। ऐसा कुछ भी उन लोगों ने नहीं किया। मैं टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आई तब मैंने उस चीज को देखा। पहले तो अपघात दिखा रहे थे। अगर अपघात था तो उसको कौन से हॉस्पिटल में लेके गए, कहाँ दवा पानी किए, ये एक खुलासा होना चाहिए था। अगर रनवे पे हुआ तो डेथ वहीं हो चुका था। ये तो कंफ्यूजन वाला न्यूज आ रही है। सब हम चैनल के माध्यम से ही देख रहे हैं। हमने जब ब्रेकिंग न्यूज में देखा कि पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट उनका स्वर्गवास हो गया, तो मैं बारामती के लिए गया और बारामती से मैं उसकी पोस्टमार्टम कराकर मैंने डेड बॉडी को लेके आया। और अगर मैं वहां नहीं जाता बारामती तो मैं बिटिया रानी का बॉडी लेके भी नहीं आता। मुझे तो कोई कंपनी बताई ही नहीं, मैं अपने से गया। कल को वो लावारिस में भी चली जाती, अगर बॉडी कोई क्लेम नहीं करता तो लावारिस में भी चली जाती। आप मानते हैं कि इंसाफ के लिए इस मामले की जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए? और कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसको लगता है कि जांच हो? महाराष्ट्र सरकार अब SIT को देती है कि CBI को देती है या कोई यंत्रणा सरकार के पास है जो इंक्वायरी इसकी निष्पक्ष अगर चौकसी करे, जिसको मराठी में सखोल चौकसी कहते हैं, बहुत डीपली जाके इसकी इंक्वायरी करेंगे तो इस तत्व को पाएंगे कि क्या हकीकत था, एक्सीडेंट था कि घात था। ये तो जनता के सामने आए। एज ए पालक के नातकारे मैं बाप हूँ तो मुझे तो मालूम पड़ना चाहिए मेरी बेटी एक्सीडेंट में गई कि किसी षड्यंत्र का शिकार हुई। तो आपका कहना है कि जांच जरूर होनी चाहिए? जांच होना चाहिए। इसका जांच से ही पता चल पाएगा कि क्या सच है। देखिए, स्कॉटलैंड के बाद मुंबई पुलिस का नाम आता है। अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती, ढूंढ के निकाल सकती है या कोई रिपोर्ट सादर कर सकती कि नहीं ये हुआ ये हुआ। अभी तो ये सब बातें गर्भ में है। We'll be right back after a short break, so stay tuned for more news.
इलाज का भरोसा, शिक्षकों का सम्मान, यूपी में आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। हमारे छात्रों के भविष्य को संवारने वाले शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों के चिंता मुक्त भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषदों के अधीन आने वाले करीब 15 लाख शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मियों और उनके परिवारों के 60 लाख से अधिक आश्रितों को कैशलेस उपचार की सुविधा देने का संकल्प साकार हुआ। अब प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक और शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा कैशलेस इलाज का लाभ। स्वास्थ्य का ध्यान है, शिक्षकों का सम्मान है, यही तो डबल इंजन सरकार है। Gauri bal pra kiniga dangor hoi jane bole mon ase. Gauri karne spunky kuigina dana introduce kuri ase. Kuntu bal pra saigina gauri ge nutrition digina dangor banable nimide ola laga ase. Itu do Mrs. Didi Poultry Khatkati Karbi Anglong Assam kuntu check ke do sorde ase tade pai jabo. Welcome back. Former Devaswam board president N. Vasu was released from Thiruvananthapuram special sub-jail on statutory bail in connection with the Sabarimala gold theft case. Vasu had spent 90 days in custody with a bail granted as the charge sheet had not yet been filed. Vasu is the 5th accused to be released in the case. He is the 3rd accused in the Dwarapalaka gold theft case and the 5th in the Srikovil threshold gold theft case. Commenting on the case, Kerala Minister M.B. Rajesh defended the ongoing investigation, stating that it is being conducted under the supervision of the Kerala High Court. He said the state government has not raised any objections at any stage, adding that it was the opposition which repeatedly questioned the court monitor probe. No, he has clarified that he has not meant that. And in fact, his words were misinterpreted. So that controversy is over. And about the Sabarimala incident, a lot of accused has been on bail, and also today on Global IFR Summit, High Court has said that there are irregularities in. And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV.